Chapter 6, that's on page number 119, one of the most scoring chapter that you're going to have, wherein this chapter is going to score you 5 marks. Plant water relationship, okay, 5 mark hai, but because of the new syllabus, whatever addition has been done, we have removed so many topics. So for you it's so easy, so please make sure. बहुत थोड़ा सा है, 5 मार्क में पूरा चैप्टर है ही नहीं. सो हम लोग क्या क्या नहीं है पहले वो देखते हैं. सो यू हैव दिस पेज 119 इज़ देयर, देन 120 till here it is there, remaining not there, not for your topic, for your final board. And for NEET also, which is not there, you are not going to get questions. That's what it has been announced last year. Reduced syllabus से ही question paper बनेगा, ऐसे बताया गया था. And then page 122, it's not there. 123, it's not there. Then 24 नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, ट्रांसपरेशन नहीं है, 29 भी नहीं है. सो ऑल यू हैव, ये पूरे चैप्टर में 5 मार्क का चैप्टर है और आपको सिर्फ पढ़ना है पहले 2 पेज. So that means you can score full 5 marks here. Let's see what you have on those 2 pages. सबसे पहले you have the heading says plant water relationship. So when you're talking about plant, how they get the water, how are they related with each other. So कुछ बहुत थोड़े चीज़ें आपको learn करनी है. So let's see for the first paragraph. You know what it says, plant obtains variety of substance like water, mineral, nutrients, food and gases. Okay, ये सारे इनके surrounding से मिलता है. लेकिन इन सारे चीज़ में सबसे जो ज़रूरी है वो environment से ज़्यादा through the soil you get. So it is the most, सबसे important. ये question आया है. Now this is an important question which is going to be there for your exam, not for sure for board, but ये बहुत common question है. इतने सारे nutrients मिल रहे हैं, इसको पानी मिल रहा है, mineral मिल रहा है, nutrients, food, gases, ये सारे मिल रहे हैं. लेकिन इनमें से अगर water गायब हो जाता है, पानी की non availability हो जाती है, तो क्या हो सकता है? तो plant की productivity को effect होता है, right? प्लांट कितना प्रोडक्शन देता है, वॉट एवर इट प्रोवाइड्स, वो कम हो जाता है. सो ये क्वेश्चन है, वाई इज़ वाटर कंसिडर्ड एज एलिक्सर ऑफ लाइफ. एलिक्सर ऑफ लाइफ, वाई, क्यों लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट कंस्टेंट इट इज़ कंसिडर्ड. नाउ द आंसर यू शुड बी नोइंग. नंबर 1, क्योंकि पौधों का हर एक सेल और टिश्यू 90 to 95% वाटर से बना है, राइट? और वाटर ही सेल की टर्जिडिटी, मतलब उसका जो स्टिफनेस है, शेप है, सब मेंटेन करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है पौधे को विथस्टैंड करने के लिए. अलग अलग प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो मेनी थिंग्स, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ. And what happens if water is not available? Third point आप लिख सकते हो, productivity in plants will be affected if water is not available. So ये question, why is water considered as elixir of life? उसके लिए you can write 3 points. 1 point is 90 to 95% is made up of water. Then water helps in maintaining turgidity. Absence of water can bring about low productivity in plants. Okay, so please write it down, these questions. Now next question. What are the different properties of water? So this is a bit of chemistry you should be understanding. So water की क्या क्या property है? सबसे पहले रूम टेम्परेचर वो कैसा होता है, लिक्विड होता है.
और वो वन ऑफ द बेस्ट सॉल्वेंट है. That means it can dissolve anything, maximum things in the earth, right? So that's why best solvent. And it has pH neutral, and it's an inert inorganic compound. One more thing, when this water is mixed with something, the pH is not neutral. We are talking about the pure form of water. जब पानी प्योर फॉर्म होता है तो उसका जो pH होता है वो न्यूट्रल होता है, राइट? And it is the best aqueous medium for dissolving biochemical, or for dissolving anything, for the reactions, biochemical reaction that has to happen. And it is the raw material for photosynthesis. Photosynthesis होना है तो पानी की ज़रूरत है. So we have done the chapter photosynthesis. If you remember, हम लोगों ने water का addition किया था to form the equation. 11th में we have learned the equation of photosynthesis, right? Now, very important point, water का specific heat बहुत high है. Then vaporization is also high. The high heat of vaporization and high heat of fusion, with one important, it's a thermal buffer. Many plants, that means industrial area, they use water as a coolant. So it's a thermal buffer also. And something very important is here in the next column. Water molecule का cohesion है. That means adhesion and cohesion बहुत ही excellent है. Attraction, force of attraction. This can be explained by simple straw, no? अगर आप जब straw use करके कुछ drink करते हो तो automatically when you are sucking in the water, the next molecule of water gets attached to the first one and it continues. ऐसा नहीं होता ना कि you're getting one by one, sip by sip. No, it is a continuous flow of water. That is the force of attraction, adhesive and cohesive force of attraction. And it has got high surface tension, जिसके वजह से कैपिलरीज में से, नीचे ज़मीन में से पौधे पानी आराम से खींच लेते हैं. सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, what causes easy rise in capillaries? पौधों के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स में मूव करता है? ग्रेविटी मीन्स टूवर्ड्स द अर्थ, लेकिन पानी जो मूव करता है नीचे से, रूट से ऊपर पौधों के पत्तों तक आता है, राइट? सो it's something very important. Why it is happening? Because water has got high surface tension and high adhesive and cohesive force. ये एक important question है. Okay? Then plants के अंदर पानी absorb करने के organ को हम बोलते हैं root. And specifically we are going to understand this diagram. When you are talking about the root, रूट के जो सेल्स हैं, वेरी कॉमन वन, इट्स लाइक द सेल्स विच आर फॉर्मिंग द रूट, इट इज़ कॉल्ड एज द एपीब्लेमा सेल्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि रूट हेयर बनाते हैं. दिस रूट हेयर इज़ फॉर्म बाय द एपीब्लेमा सेल्स, एपिडर्मल सेल्स और एपीब्लेमा सेल्स. ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है. Now I want to show you something which, okay, आपके सामने जो इमेज है, हम इसको बोलेंगे, this is the flower called as orchid. Okay, orchid एक ऐसा पौधा है जिसको हम दूसरे प्लांट पे भी ग्रो कर सकते हैं. सो इस पौधे की खासियत क्या है? इसका रूट. दिस इज़ द रूट ऑफ ऑर्चिड. नाउ व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ऑर्चिड रूट? इसके अंदर एक टिश्यू है, यू कॉल इट एज वेलेमिन. ओके, व्हाट डज दिस टिश्यू डू? वेलेमिन जो है, रूट जनरली, अच्छा एक बात बताओ, रूट जनरली कहाँ से पानी अब्जॉर्ब करता है? अंडर द ग्राउंड. लेकिन जो ऑर्चिड का ये जो रूट है, इसके वेलेमिन टिश्यू के वजह से ये हवा में से वाटर मॉलिक्यूल को अब्सॉर्ब करता है पौधों के लिए. Isn't it amazing? So these kinds of roots are called as
epiphytic root. Let's go back to the chapter. If you want to just have a look at it once again, then you can have it. This is an orchid plant growing on another tree, wherein जो root है वो हमेशा aerial होता है. That means it is always hanging in the air because of the tissue velamen. ये root हवा में से water को absorb कर लेता है और इस root को बोलते हैं epiphytic root. So you understood what is velamen, you understood what is epiphytic root, so we have that over here. So let's underline. First, root क्या है? Main organ for water and mineral absorption. और जो पौधे हैं, टेरेस्ट्रियल पौधे, उनके रूट अब्जॉर्ब करते हैं पानी के फॉर्म में सॉइल से, राइट. लेकिन स्पेशल पौधे हैं जो कि ऑर्चिड है, जिनके रूट्स कैसे होते हैं? एपीफाइटिक रूट्स होते हैं. और वो क्या करते हैं? वाटर वेपर को एयर में से अब्जॉर्ब करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बारी आता है. इट्स नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. दिस क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन. देन जो रूट के जोन्स होते हैं, अच्छा, what is that special tissue that is present in that epiphytic? It's velamen. And when you are dividing the roots, this is a root, you have different zones. कुछ एरिया absorption के लिए होता है, कुछ एरिया epidermal cells के बने हैं, and they some are for growth, right? So these are some zones of the root. So question can come directly. Draw the structure of root showing different zones. Okay. So please make sure you draw this diagram. So you can draw this diagram. This is a question. Draw the structure of root tip showing different root hair zones. Okay. So you can draw this. Next is a very important question. Again, this question is very commonly asked. Plant cell अगर हम draw करेंगे, this is, if I am saying this is plant cell, in the center what do you have? Vacuole. एंड जो न्यूक्लियस है वो साइड में होता है, राइट. सो ये जो वैक्यूल है, दिस इज़ सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म. तो ये ही है स्ट्रक्चर. इसके अंदर ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर है ना, दिस इज़ द वैक्यूल विच इज़ सराउंडेड बाय द वैक्यूल इज सराउंडेड आउटसाइड. देखो सारा साइटोप्लाज्म है, राइट. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी कॉमन. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर. So you should be drawing, you should be able to show cytoplasm दिखाना, then cell membrane show करना चाहिए, then nucleus on the extreme side and vacuole is extended, cytoplasm is there, mitochondria as a organelle is present. So next question is draw the structure of root hair. Very important question. Okay, then next is explanation of structure of root hair. So what is a root hair? If they ask you explain root hair, अगर ये 4 मार्क हो गए, 5 मार्क्स का चैप्टर ही है, but then you can be dividing it. So you should be knowing what all things you have to write. Root hair is cytoplasmic extension. जो cytoplasm है वो ही extend हो रहा है ना, right? I showed you here, no? So this is the cytoplasmic extension. Cytoplasm has extended over here. So root hair is the cytoplasmic extension of which cell? Epiblema cells, right? So जितने भी root hair हैं वो कितने लंबे होंगे? It's somewhere around 1 to 10 millimeter long and tube-like structure होगा, and they are colorless, unbranched and ephemeral. Why this word ephemeral? Because they don't live for long, okay, and they're very delicate, and it has got large vacuole in the center which is surrounded by plasma membrane and a very thin cell wall. Okay, then we have outer layer, जो कि ये question आया है. आउटर लेयर जो रूट हेयर का है वो किस चीज़ का बना है? पेक्टिन का बना है. एंड इनर लेयर बना है सेल्यूलोज. लेट्स हैव अ लुक एट इट. सो आउटर, कैन यू सी 2 लाइन्स? 2 लाइन बने हैं, राइट. सो जो ऊपर का है लाइन, सो इट इज़ मेड अप ऑफ पेक्टिन, वेयर एज
the inner layer is made up of cellulose. Okay, and जो cell wall है वो freely permeable है. Permeable means वो कुछ चीज़ों को नहीं select करता, सबको entry देता है, हर एक substance को, ions and different nutrients, everything is allowed in. But जो plasma membrane है, you remember no, cell has got two layer, plant के cell, एक cell wall भी होता है, एक plasma membrane भी होता है. So जो plasma membrane है, that is selectively permeable. So it can be asked, how will you differentiate between cell wall and plasma membrane here? So cell wall is freely permeable, whereas the plasma membrane is selectively permeable. मतलब वो सबकी entry allow नहीं करता, सारे nutrients की entry allow नहीं करता. Next, it is the types of water. Again, another question which you should be knowing from this chapter. What are the different types of water available to the roots for absorption? तो पहले हम देखेंगे what are the different types of water, right? जो plant जिस area से पानी absorb करता है उसको हम बोलते हैं rhizosphere. That's a small environment around the root. If this is a root, the area around the root is called as rhizosphere, right? You have heard lithosphere, you must have heard hydrosphere. So this is a small area. Rhizosphere is a place or surrounding micro environment which is around the root. So this question says what are the different types of water, but from where the water is absorbed, that place is called as micro environment. So नाम याद होना चाहिए, rhizosphere, right? Then first thing, types of water available or types of water present in the soil. See, there's a two different question. Water present in the soil, water available to the plants. Now, when you talk about water that's present in the soil, it can be divided into four. सबसे पहला gravitational water, मतलब जो कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से it goes deep down. Okay? So, ये पौधों को अवेलेबल नहीं होता. Then second, hygroscopic water, जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उसके आजू बाजू अटैच हुए होते हैं. This is a sand particle, if I am saying sand particle के पूरे सराउंडिंग में अटैच हुआ पड़ा है. So that is hygroscopic water. So it is, just read it once again, fine soil particle imbibe and absorb water and hold it. पानी को वो अपने पास रखता है. So this water is also not available to the plants. Next is combined water. Combined water मतलब या तो वो ऑक्साइड्स के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ या सिलिका ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके फॉर्म में होता है. इट्स नॉट फ्री फॉर्म, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल. इट्स नॉट ईजी टू ब्रेक द बॉन्ड, सो इट इज़ नॉट अवेलेबल. एंड द लास्ट वन, दैट्स द कैपिलरी वाटर, जो कि पोर्स के बीच में होते हैं, सॉइल्स के बीच के जो स्पेस है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं. तो लास्ट का ये जो पानी है ये हमारे पौधों को अवेलेबल है. सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल. तब आप कितना लिखोगे पॉइंट? 4 points. ओके, बट इफ अ क्वेश्चन कम्स which water is available to plants, so only one answer is there, that's capillary water is available. So capillary water means the water present in the pores between the soil. अगर ये soils हैं, soil particle है, so उसके बीच के जो pores हैं तो वहाँ पे यहाँ इस area में इस triangular part you have the capillary water present. Okay, so you people are all set to get 5 marks for this chapter, remember. And if you have more doubts, please make sure you are asking from me. Send me your questions.